हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज मिश्रा आप लोग का वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ही रिजॉल्व में, जहाँ पे आपके कहने के बेसिस पे और हमारे आइडियाज़ के बेसिस पे आपको वीडियोस मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को ऑल पे इनेबल करना भी ना भूले, जिससे कि हमारे वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, तभी जो मैं इसमें बताने वाला हूँ वो आपको मैं समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हम क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस चैप्टर के। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ preservation of food? Answer: it decreases the food wastage by avoiding spoilage. It increases the storage period of food material. Nutritional value of the food is retained for a longer period. Next, describe useful microorganisms. Useful microorganisms are very useful for microorganisms such as in production of alcohol, in preparation of certain medicines, in preparation of curd, bread, etc. Next question, what do you understand by fermentation? The process of conversion of sugar into alcohol by the action of microbes like yeast is known as fermentation. Next, explain vaccine as a small dose of weekend to kill diseases causing microbes to immunize body against a particular disease called vaccine. Write the four main features of viruses. Main features of viruses are: viruses obtain their food from host cell. Viruses can only be seen under electron microscopes. Viruses are smaller smaller than the smallest known cell, and viruses have no fixed shape. मैंने ये नहीं पॉइंट लिखा है, तो मैंने ये पॉइंट नहीं लिखा है। एक वायरसेस हैव नो फिक्स शेप, तो आप इसे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन वायरसेस। ओके, the word viruses means poisonous liquid. Viruses are smallest microbes organisms to 20 to 300 MPa. They can only studied under electron microscope. They live, grow, and reproduce inside living cells of plants and animals. Viruses consist of a single strand of muscular matter, DNA or RNA, surrounding by a protein coat. They obtain nourishment from their host cell. Next question है, why is yeast added to mixture made for making cake? Explain. Yeast is added to mixture made for making cake because it makes cake spongy. We know when cake, what is this written? Norden. These holes still remain there, thus making cakes fully spongy. Next question, explain two methods of food. This is what written. Wait a minute, I'll just see. Two methods of food advantage preservation. Also discuss their food preservation. First, two methods of food preservation are freezing. Discouraging the growth of microorganisms is to store food at low temperature called cold storage. Heating, drying, freezing does not kill germs, but heating kills them. That is why we boil milk. Advantages of food preservation: it decreases the food wastage by avoiding spoilage. It increases the storage period of food material. Nutritional values of food is retained for a long period. That answer is same as question number first. So next question is, explain nitrogen cycle. Answer: the process of circulation of nitrogen between atmosphere, soil, plants and animals is called nitrogen cycle. When plants eventually die, nitrogen compounds are broken down to give ammonia. This is called ammonification. Nitrifying bacteria convert ammonia into nitrates. This is called nitrification. This process of circulation of nitrogen between atmosphere, soil, plants and animals is called nitrogen cycle. सो फाइनली हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले से कंप्लीट किया था, अब हमने क्वेश्चन आंसर्स को भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम दूसरे चैप्टर पे मूव करेंगे। अभी मैंने चैप्टर चूज़ नहीं किया है, मैं जब चैप्टर चूज़ कर लूँगा तो आपको उस पर वीडियो दे दूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड बी सेफ एट योर होम।